Well, they completely embarrassed themselves per usual. Morgan Freeman had an incredible career starring in some of the most iconic films of all time, and you'd never expect interviews with him to be filled with such meaningful discussions. But The View had other plans. Instead of anything substantial, they turned the conversation into empty chatter, and to make things worse, the segment was cut short, leaving viewers frustrated. So today we are breaking down everything that went wrong in that interview, and you're going to love how he completely silenced their race-baiting attempts. As always, make sure to subscribe and hit the notification bell for more videos just like this. I'm one of those people who's very, very interested in this subject, life on the planet. You understand that today, life on the planet is in a little bit of trouble. And we're the cause of it. That's right. There have been, if I remember correctly, 6 extinction-level events on the planet since life began. I mean, 6 times, large portions of life. Not human life we're talking just life. Gone, destroyed. We're headed for another one. Scientists have said if we don't hurry up and change our ways, there's going to be a cataclysmic event. To give a bit of context, Freeman went on this episode to promote his Netflix documentary, Life on Our Planet, which takes viewers through Earth's history, exploring the rise and the fall of different species and how life has adapted to catastrophic events, kind of like mass extinctions. But here's what makes this documentary stand out. It doesn't follow the usual doomsday script that so many environmental pieces love to push. Instead of acting like the world is going to end in the next 30 minutes if we don't take extreme measure, it actually takes a more level-headed approach. It acknowledges that environmental changes have been happening for millions of years, long before humans ever walked on the Earth. Obviously, Joy wasn't about to let that slide and had to interrupt with this. You look back, and this series does that. How far back does life exist on this planet? And why does it still exist? It is because life is tenacious. Life. We're not talking about human beings here. We're talking about the planet. Yeah. She'll stay. Yeah. Well, it's tenacious if we would just leave it alone. Leave it alone. And the human interruption of all of that is what's causing all the problems. I hope that it's not too late. But let me ask you this, Jeff. Did seeing the rise and fall of all these species, because some are coming in too, right? And many are leaving the planet. Did that change your perspective on life? My perspective on life? I don't think it changed my perspective. It just enhanced it. Because for a long time now, I've been listening to what they say about, I drive an electric car. You could see Morgan was clearly mocking Jay for her over-the-top alarmism, and honestly, it's about time someone did. The climate history has gotten so out of control that people are genuinely afraid. For instance, back in 2019, 11,000 scientists warned of untold suffering coming our way, but here's the catch. It wasn't too late unless we adopt measures such as high carbon taxes to punish fossil fuel use, shifting economic goals away from GDP growth, cutting back on meat, and get this, stabilizing the global population. In other words, we should live like cavemen because a bunch of activists said so. Give me a break. If these people had their way, you'd be eating bugs while they flew around in private jets, lecturing you about your carbon footprint. Rumor has it that if you grill a nice juicy steak, they absolutely lose it. So drop a like if you're about to fire up the grill tonight. Sunny also had a question for the legendary actor, and of all the questions that she asked, it was this. I want to ask you about a different documentary. Go ahead. As some politicians around the country try to erase Black history, you're making sure people don't forget vital parts of our past, including this documentary that you executive produced called 761st. Did I get that right? Yeah, 761st Tank Battalion, the original Black Panthers, about the first Black battalion to fight in World War II. First Black Armored Battalion. Yes, and you served in the Air Force. I know that. This film was then very personal to you. Oh, yes, heavens. Start in the 40s and move up. And how many times did I see
black people in the movies. And if I did see them, what were they doing? Yeah. There were servants. They were always. I know it's appalling. I can give you the name. If you watch old movies, Betty Davis movies are particularly, even though she's great, and it's the period. It's not her fault. It's the period. It's upsetting to watch. To tell you the truth. It shouldn't be that way because somebody did make money. Yeah. You have Morgan Freeman in the room, and that's what you ask? Did I mention that this episode was completely wiped from The View's YouTube channel? Yeah, they tried to erase it from existence, but thankfully our boy the Wayback Machine's got our backs. Clearly they didn't want the world to see their race baiting fail so miserably. And let's start with Sunny. If she had done even a little bit of research, she would have known that Morgan Freeman has repeatedly said that Black history is American history, but that wouldn't fit her narrative, I guess. And then there's Joy. She looked more offended than actual victims of discrimination. The way she reacted when Freeman shut down her pity party was priceless. Seeing this, Whoopi decided to step in, and what followed next was nothing out of the ordinary. That's the time. Now look at today, things we're always in flux. Yeah. Always. But we've always been here. Yeah. Fluxing out. Flux. Exactly. I had a question, but we run out of time. Listen, this is extraordinary, this documentary. Oh, yeah. I agree. Of course, the same old running out of time excuse. Now, it might have been real, but I find the way they wasted this man's time was beyond disrespectful. This is Morgan Freeman. Less accomplished guests have gotten double segments on the show, but for a legend like Freeman, they gave him 6 minutes. And to make it worse, it was filled with nonsense and nothing of value was asked, then deleted. To wrap things up, here's Morgan explaining in an appearance on the Oxford Union why both Sunny and Joy were wrong, and this is definitely the best clip you'll see this whole week. I don't think there is an issue of race in Hollywood. Somewhere back there in the 70s, the decision was made by almost all and sundry that we have to start open casting. Now, if you look on television, you pretty much see the range of cultural, that's not the right word because we all belong to the same culture. Anyway, but you see everybody. And I think that Hollywood learned in the 70s, here's reality. Isaac Davis directed a movie called Cotton Comes to Harlem. It made hundreds of millions of dollars. And of course, Hollywood is colorblind. It only sees green. You see the amount of wisdom the man shares if you ask him the right questions and let him speak? He's lived through that time frame in Hollywood and knows what he's talking about. But leave it to the ladies of The View to ruin a golden opportunity like this. But I'd love to know your thoughts here, so let's get the conversation rolling in the comments down below. And if you liked the video, please share it with your friends. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. यकीन करो शर्मंदा पे गाल करने जो सारे सरेके में इतना हसा दिए असा ये गाल सोच कराना ही जो सारे नाल सरेके एक काम करे सन सारे सरेके दे अकाउंट ते फेक व्यूज मारे वेंदे पैन उन्हें को तले सटण दी कोशिश कीती वेंदी पई असा इतना सरेके दे हक आवाज चादी पे साको सिला जो मिलदा पे ई टाइम सब तू घट और घट सारे फॉलोअरन असा ये जरा छोटे कंटेंट क्रिएटर होते हैं और आवाज ही असा चाहती पे देखो जा जेरे बड़े सरेके कंटेंट क्रिएटर वदन कोई बंदा ही सरेके दे हक आवाज करनी चाहती पे लेकिन आज सारे नाल ए सलूक कीता वेंदा यार तुसा निवे सपोर्ट कर सकदे ब्लॉक दा ऑप्शन सारे के ए पे तुसा ब्लॉक कर सको कम से कम बे को हेट न देओ ए बे को कमजोर करने वाली गाल है ठीक है अगर एक अकाउंट फ्रीज थी वैसी बी अकाउंट बन वैसी लेकिन गाल है उन स्टेज पे बंदा खड़ के इस चंदे पहली टेक इन्हें बंदे की खातर मैं उठावी ठीक है आज ये बंदे में कोई हेट देने पर ई हिसाब तो तसा कदी अगू तो निकल ही नहीं सकते सारा यो हाल साडे अंदरों इतना हंसा दे जो असं बे को अगू तो निकलता देख ही नहीं सकते क्या है यार जरा सारी रात गेम खेलते वीडियो बने उनकी क्वालिटी चेक करेंदे उनके बाद को अपलोड करेंदे वो सवेरे उनका रिजल्ट ही जो हमदा खड़ा हुए फेक व्यूज उनकी वीडियो तो लगे खड़े हुए क्या सही है सारे को एक गाल जेब देंदी है अगर कोई उर्दू कंटेंट साडे अपने सरेकी जो उर्दू कंटेंट रखी पे सारे को बिग फैन आदे खड़े रहंदे असा सारे को खुददार कीते अपने पेरें तन खड़े से सारे टिकटॉक ते वीडियो सट्टी पैन वही सवार की पैन कहीं को असा उच्चा झिका नहीं समझा
खुददार बने से आज सब कोई जो रिजल्ट मिलता पे सारे वीडियो ते फेक व्यूज मारे वेंदे पे हर कोई यार अपनी मेहनत मरेंदा पे अगर निकल सो सारे सरेके दा ना है साकू पबजी के छडेंदी पी या टिकटॉक के छडेंदी पी है सारे ग्रुप में 600-700 बंदा है एक बंदे को संभलदा रहंदे क्या है सारे सरेकी हैं सा कहीं को वलदा ना डिवीजे तो आदमी ने जरूर आ गए कहीं को वलदा डिवीजे तो ने संबंध झालम दे हर गाल बर्दाश्त की थी पे आखिर पे वला बिया ये रिजल्ट देने पे इन वजह के जोर लई पे जो साडे सरेके दा कोई जात ना आवे सी देखो जो तेरे सामने हर बंदा आज 22 ओवर की थी पे मेरे सरेकी शर्म के गेम तक न खेलते हैं आज वही 22 ओवर की थी पे यार मेहरबानी करो आखिर ते ये रिजल्ट नहीं जीविंदा अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो यार सारे के बुला कर ऑप्शन है बुला कर सटो तो गाल ही खत्म बेदा नुकसान करना ये तो चंगी गाल कहीं नहीं एक बंदा इतना मेहनत करेंदे उनके बाद कंटेंट कढेंदे कंटेंट बनावन सौखा है किवें पता नहीं कितने कितने गेमा खेलना पमजन भला बन के कंटेंट बनदे अच्छा झिक्के तब के आली डिवाइस वो ने हिके स्क्रीन रिकॉर्ड ते लैग मारन पे वे अच्छा पता नहीं किवें मेहनत करके तो स्क्रीन रिकॉर्ड बनावंदे इथा आके अपनी सरेकी जुबान दी आवाज चेंदे हैं उनके पास आपको ये रिजल्ट मिलता पे अफसोस है यारा यकीन करो शर्मंदा पे गाल करने जो सारे सरेके में इतना हसा दिए असा ये गाल सोच कर ना जो सारे नाल सरेकी एक काम करे सन सारे सरेके दे अकाउंट ते फेक व्यूज मारे वेंदे पैन उन्हें को तले सटण दी कोशिश कीती वेंदी पई है असा इतना सरेके दे हक आवाज चादी पे साको सिला इजो मिलदा पे ई टाइम सब तू घट और घट सारे फॉलोअरन असा ये जरा छोटे कंटेंट क्रिएटर होते हैं और आवाज ही असा चाहती पे देखो जा जेरे बड़े सरेके कंटेंट क्रिएटर वदन कोई बंदा इस सरेके दे हक आवाज करनी चाहती पे लेकिन आज सारे नाल ए सलूक कीता वेंदा यार तुसा निवे सपोर्ट कर सकदे ब्लॉक दा ऑप्शन सारे के पे तो ब्लॉक कर सटो कम से कम बे को हेट न देओ एक बे को कमजोर करने वाली गाल है ठीक है अगर एक अकाउंट फ्रीज थी वैसी बी अकाउंट बन वैसी लेकिन गाल है उन स्टेज पे बंदा खड़ के इस चंदे पली टेक इन्हें बंदे की खातर मैं उठावी ठीक है आज ये बंदे में को हेट देने पर इन हिसाब से तो कदी अगू तो निकल ही नहीं सकते सारा यो हाल साडे अंदरों इतना हंसा दे जो असं बे को अगू तो निकलता देख ही नहीं सकते क्या है यार जरा सारी रात गेम खेलते वीडियो बने उनकी क्वालिटी चेक करेंदे उनके बाद वो अपलोड करेंदे वो सवेरे उनका रिजल्ट ही जो आमदा खड़ा हुए फेक व्यूज उनकी वीडियो तो लगे खड़े हुए क्या सही है ये सारे को एक गाल जेब देंदी है अगर कोई उर्दू कंटेंट साडे अपने सरेकी जो उर्दू कंटेंट रखी पे सारे को बेग फैना दे खड़े रहंदन अच्छा सारे को खुददार कीते अपने पेरें तन खड़ाए से सारे टिकटॉक पे वीडियो सट्टी पैन 22 ओवर की थी पैन कहीं को असा उच्चा झिका नहीं समझा खुददार बने से आज सब कोई जो रिजल्ट मिलता पे सारे वीडियो ते फेक व्यूज मारे वेंदे पैन हर कोई यार अपनी मेहनत मरेंदा पे अगर निकल सो सारे सरेके दा ना है साकू पबजी के छडेंदी पी या टिकटॉक के छडेंदी पी है सारे ग्रुप में 600-700 बंदा है एक बंदे को संभलदा रहंदे क्या है सारे सरेकी हैं सा कहीं को वलदा ना डिवीजे तो आदमी ने जरूर आ गए कहीं को वलदा डिवीजे तो ने संबंध झालम दे हर गाल बर्दाश्त की थी पे आखिर पे वला बिया ये रिजल्ट देने पे इन वजह के जोर लई पे जो साडे सरेके दा कोई जात ना आवे सी देखो जो तेरे सामने हर बंदा आज 22 ओवर की थी पे मेरे सरेकी शर्म के गेम तक न खेलते हैं आज वही 22 ओवर की थी पे यार मेहरबानी करो आखिर ते ये रिजल्ट नहीं जीविंदा अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो यार सारे के बुला कर ऑप्शन है बुला कर सटो तो गाल ही खत्म बेदा नुकसान करना ये तो चंगी गाल कहीं नहीं एक बंदा इतना मेहनत करेंदे उनके बाद कंटेंट कढेंदे कंटेंट बनावन सौखा है किवें पता नहीं कितने कितने गेमा खेलना पमजन भला बन के कंटेंट बनदे अच्छा झिक्के तब के आली डिवाइस वो ने हिके स्क्रीन रिकॉर्ड ते लैग मारन पे वे अच्छा पता नहीं किवें मेहनत करके तो स्क्रीन रिकॉर्ड बनावंदे इथा आके अपनी सरेकी जुबान दी आवाज चेंदे हैं उनके पास आपको ये रिजल्ट मिलता पे अफसोस है यारा